हेलो एंड जय जगन्नाथ। तो आज आम डिस्कसन करवा गोटे नुआ थ्योरी दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ओबी। देखो पूर्व आम पढ़ते ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विषय ओबी को जब आम डिफरेनशिएट करवा तो ओबी रो डेवलपमेंट आज जो ओबी पर्यंत पहुंचला तो तार इवोल्यूशन टा डिफरेंट प्रोसेस रही। फास्ट ऑफ ऑल आम तो पढ़ले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आम के रॉबर्ट ओवेन जेएन टाटा एमानकर ना नहीं। देन नेक्स्ट आसला साइंटिफिक मैनेजमेंट। धीरे 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 जितेबाला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आगू बढ़ला तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम रे भी वर्कर मान को बहुत नेग्लेक्ट करा जाउतला। तो जेन टाटा एंड रॉबर्ट ओवेन को भली लोक टिके टिके किछि 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 तारे इंप्रूवमेंट आनले। देन आउ गोटे थ्योरी आसला दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अच्छा जेमति कि या ना ही डिनोट करछे साइंटिफिक मैनेजमेंट तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हम काउ कहबा ना साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज ए मेथड ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन द वर्कफोर्स as its name implies. This management theory uses scientific method to assess the work process. Okay, हमको different scientific method रे work रो processes टाको access करिवार अछि। आमे कोन कोन scientific method यूज करिकरी कोन करि परिबा हम work रो productivity को बढ़ाई परिबा एम्प्लॉय मानकर productivity को बढ़ाई परिबा। ओके देखो the scientific method consists of three steps. कौन three steps? One is the observation, another is the experimentation, another is the analysis. Okay, observation, experimentation, analysis. Normally science हमारे तीनटा स्टेप ऊपर ही तो डिपेंड करी आगू बढ़े ना। ऑब्जर्व करे देन तापरे एक्सपेरिमेंट कोन होई परिबा तापरे एक्सपेरिमेंट करे देन एक्सपेरिमेंटल डाटा टाको एनालिसिस करे। तो ये तीनटा स्टेप को हमें कोन करबा ना मैनेजमेंट रे नहीं पुट कर दवा। जेमते सिमिलरली साइंस रे होजे ताको हमें मैनेजमेंट रे पुट करबा। आमे कोन करबा सिमिलरली मैनेजर्स यूज साइंटिफिक मेथड थ्योरी टू ऑब्जर्व देयर वर्कप्लेस, test different method to complete tasks and analyze the effects of the changes. Okay, ସେମାନେ कोन करंती वर्कप्लेस को ऑब्जर्व करंती डिफरेंट मेथड माने गोटे टास्क को कंप्लीट करिया पे जो डिफरेंट मेथड अछि ताको टेस्ट करंती जे को मेथड रे मोस्ट सुइटेबल बा मोस्ट प्रोडक्टिव वे रे ए हमर कामटा हेइ पड़छि। देन एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस। से चेंजेस करबा द्वारा तार इफेक्टटा कोन पड़छि एम्प्लॉय मानक ऊपर कोन पड़छि ऑर्गेनाइजेशन ऊपर कोन पड़छि प्रोडक्शन ऊपर कोन पड़छि। Okay, when properly implemented, scientific management theory improves productivity. It is an evidence-based method that prioritizes efficiency and reliability. Having scientific rigorous work method in place creates clear expectation for employees because it establishes a single right way to do things. Okay, जेते हमें scientific management यूज करछे निश्चित रूपे एरा प्रीवियस मेथड टारो मोर प्रोडक्टिव होता है। ओके देन एबे टिके जानिबा हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज हम जाको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोली कहूचे तार हिस्ट्रीटा कोन देखो को कहा पाखुरे साइंटिफिक मैनेजमेंट सृष्टि हला। द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बिगिंस विथ 20th century बाय मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेडरिक विंसलो टेलर। आंका नाटा मन रखिबो जदि हमें कहूचे ना नॉर्मली हमरो ओबी रे आमे मैनेजमेंट स्टडी रे जदि केते जण का नाम मन रखिबा को अछि जेमति एफडब्ल्यू टेलर एले फ्रेडरिक विंसलो टेलर देन रॉबर्ट ओवेन एले जेन टाटा एले देन एमती बहुत गुडा ना अछि जो गुडा कि कोन हुए मैनेजमेंट पिलांकर मुहा आगे रहा कथा माने जेंदा में इंजीनियरिंग पढुचे तो आइंस्टाइन साइंस पढुचे तो आइंस्टाइन जेमती तो एमाने भी मैनेजमेंट फील्ड रे बहुत कंट्रीब्यूशन दैछथि। मैथ पढुचे रामानुजन बुझी पड़छो तो ये सब बहुत कंट्रीब्यूशन दैछथि। In Taylor's time, America was the cause of industrialization. America industrialization start ही जाइतला. But management method has not yet changed to keep up with changes in technology. किंतु management method रे किछि upgradation ही नथला. While working as a steel manufacturing plant, Taylor observed several production problem. से सतबले कोड थिले ना गोटे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रे थिले तो टेलर किछि प्रॉब्लम ऑब्जर्व कले। अच्छा कौन से प्रॉब्लम ऑब्जर्व कले? For one thing, there was a little specialization of labor or tools. Work shifts were randomly assigned, so inexperienced workers often ended up trying and failing to complete important projects. Tools were crude, and since only a small number of tools were used for every task, they wore out quickly. ओके देखो कितने प्रॉब्लम थिला लेबर स्पेशलाइजेशन टूल बहुत कम थिला वार शिफ्ट गुडा का रैंडमली असाइन होतला माने चाहा को जो शिफ्ट करतले से शिफ्ट दे दोतले तो को शिफ्ट रे सब स्किल्ड लेबर रे जाउतले को शिफ्ट रे टोटल पे स्किल लेबर केही नांती का को भी काम जण भल से जणा नै। देन कोन होतला इंपोर्टेंट टूल्स रो भी अभाव थिला ठीक भाबरे कामडा बा प्रोडक्शन ता ठीक भाबरे होनतला। ओके For another, there was no single best standard for workers to aspire to. Okay,
बेस्ट स्टैंडर्ड किछि नथिला जे वर्कर मानको ताकू जाहाकू वर्कर माने एस्पायर रखि परिबे बुझि परछे जे बेस्ट स्टैंडर्ड वर्कर कोन हो दरकार एवरीवन डिड देयर जॉब इन व्हाटएवर वे दे थॉट वर द बेस्ट माने काम केमती होतला जे मु गोटे वर्कर मते जहा भल लागुची मते जोटा बेस्ट लागुची मु से वे रे काम करथली आउ जण वर्कर को जहा बेस्ट लागले से बुझी पड़छ जेमती गोटे गाड़ी थाए घोड़ा गाड़ी जदि हम देखिया घोड़ा गाड़ी ले चारटा घोड़ा बंधा हिचंदी जदि गोटे घोड़ा ईस्ट गोटे घोड़ा वेस्ट गोटे घोड़ा नॉर्थ गोटे घोड़ा साउथ पूरा एफर्ट रे से माने भिड़िबे तो गाड़ी कुआडे जीवो कि कुआडे जीवनी तेणु मस्ट बी ऑर्गेनाइजेशन हैज ए डेफिनाइट गोल जो गोल को ऑब्जेक्टिफाई करिया पय हमको समस्त को कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी रे आगु बढ़िबा पड़ियो जे चारटा जगह घोड़ा गोटे डायरेक्शन रे बढ़िबे ताले जे ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी निज रैपिड ग्रोथ करि परिबो ओके किंतु सेतबेले प्रॉब्लम ता या होतला बुझि पड़छो माने वर्कर माने जे कंट्रीब्यूशन तो फुल दोथले किंतु निज निज डायरेक्शन रे काम करथले तेणु ऑर्गेनाइजेशन गोल satisfy ही पारनतला ओके फाइनली मैनेजर्स वर completely disconnected from the workers they supervised okay the average managers have no idea how the workers tasks were performed so they are unable to provide suggestion for the improvement अरे मैनेजर जे हबो जे सुपरवाइज करिवो पूरा काम न आसु तो किछि ना किछि तो आईडिया हबा दरकार गोटे आईएएस ऑफिसर ग्रेजुएट पढी कि आईएएस जे होउची आर्ट्स पढ़ी कि आईएएस होउची से पुणी तो हमर स्वास्थ्य सचिव होउचंती हेल्थ डिपार्टमेंट रो से पुणी सेक्रेटरी होउचन ना नहीं से तो नॉर्मल आर्ट्स पढ़ी कि जाईची देखो कोन पढिछे दैट इज नॉट मैटर बट तमरो जो डिपार्टमेंट रे तमे रहइबो ना ता ऊपर किछि फंडामेंटल नॉलेज थिबा दरकार जेमति तमे आगु को असिस्ट करि परिबो ओके बट सेतबेले जो मैनेजर थिले ना तांकर वर्कर माने कोन काम करदन ता ऊपर किछि नॉलेज ही नथिला तो सेमान तो कोन सुपरवाइज करिवे ओके टेलर सेट आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टेलर को नजर को एटा आसला टेलर तो निजे स्टील प्लांट रे काम करथिले तो तांको नजर रे सो पड़ला जे प्रॉब्लम डा एठी ओके ही डिजाइन स्पेशलाइज्ड सोवेल्स एंड अदर टूल्स से निजे निजे ही टूल तयारी कले बुझी पारछो ही एडवोकेटेड फॉर वर्कर्स टू बी मैच्ड टू द प्रोजेक्ट फॉर व्हिच दे आर मोस्ट नेचुरली गिफ्टेड ओके से कोन कले ना जो वर्कर जो काम पई परफेक्ट ताकू सेही काम ही असाइन करा गला he trained managers in his method so that they could implement scientific management theory in their workplace manager मानको भी ट्रेनिंग दिया गला जैसे केमिति ये मैनेजमेंट थ्योरी टाको निजर वर्कप्लेस रे यूज करि परिबे टेलर्स इज क्रेडिटेड विथ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्टिविटी इन द अमेरिकन वर्कफोर्स at his own steel plant the amount of pig iron the workers could transport in a day reportedly tripled once triple हे गला they advocated his method a method use करिकरी जहा तांका स्टील प्रोडक्शन चल नतला ट्रिपल हे गला स्टील प्रोडक्शन रो ट्रांसपोर्ट ता okay his idea spread rapidly and helped give rise to a new industrial age okay scientific method to sometimes even referred to as taylorism in his honor एटा मन रखिबो साइंटिफिक मेथड को कोन को जे टेलरिज्म को जे तो जदी एग्जाम रे क्वेश्चन आसला कि इंटरव्यू रे क्वेश्चन आसले साइंटिफिक मैनेजमेंट रो फादर बोली का को जे एफडब्ल्यू टेलर ओके टेलर करो कोन कांसेप्ट तला बुझी पारलो ना ओके देन टेलरिज्म एंड क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी आको हम स्किप करबा ओके देन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कोन थला देखो तमे चाहिले आको निजे पढी परियो हम किस समय रखु जे तमे पॉज करिकि पढी परियो ओके देन the principle of scientific management theory कौन सो प्रिंसिपल देखो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला चूज मेथड बेस्ड ऑन साइंस हमको एमती किछि मेथड चूज करिया पड़िबो जहा साइंस ऊपर बेस्ड यूज साइंटिफिक मेथड टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट वे टू वर्क ए टास्क फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट हमको कहा पर फोकस करिया पड़िबो हमको इंक्रीजिंग प्रॉफिट आउ प्रोडक्टिविटी आ ऊपर फोकस करिया पड़िबो किंतु कामटा हमें को मेथड रे करिवा ना साइंटिफिक मेथड यूज करिवा ओके then next assign workers to tasks based on their natural skill set गोटे जेमती हम ऑर्गेनाइजेशन रे बहुत गुडा वर्कर अछंती किंतु जहा को क्लरिकल काम भलो आछी ताकू जदी हमें नै मैनेजरियल स्किल रे करबा जेमती जदी हमें देखिबा लेट गोटे स्टूडेंट सेट नै जा गोटे स्कूल रे 100 जण लेट पिला अछंती गोटे क्लास रे 100 जण पिला अछंती 100 जण रो 100 जण कर मैथ भलो होय नथिबो किबा समस्तंकर साइंस भलो नथिबो किछि पिला अछंती जो मानकर मैथ बहुत भलो हुए किछि पिला अछन जो मानकर साइंस भलो हुए किछि मानकर लिटरेचर बहुत भलो हुए ओके तो हमकु मैथ वाला को टेलर कोन कहले मैथ वाला को गोटे काम करो मैथ डिपार्टमेंट पूरा दे दियो ओके जो मानकर मैथ भलो हुए से मानको मैथ रो प्रॉब्लम
सॉल्व करिया को दे दियो जो मानक साइंस होची से मानक साइंस प्रॉब्लम सॉल्व करिया दे दियो एकदा न जे मैथ वाला को तमे जो हिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करिया को हिस्ट्री रो क्वेश्चन आंसर करिया को हबो कि जेमती आमे माछ ठेकुआ आउ पक्षी ए तीन जन को भितर रेस करिया किंतु स्टैंडर्ड रखिया जदी पानी रे पहरियार अवस्था कौन हम कि गचरे चढ़ियार समस्त एकाथरे सब प्रकार स्किल सेट नहीं कि जन्म होना ना तो समस्त किसी ना किसी क्वालिटेटिव स्किल सेट अच्छी तो आमको टेलर से ही कहले जार जहाँ नेचुरल स्किल सेट अच्छी से कम ही असाइन कर ओके देन मॉनिटर योर वर्कर्स परफॉर्मेंस तुम वर्कर को परफॉर्मेंस रे को तुम मॉनिटर कर जो वर्कर कौन काम कर परफॉर्मेंस केमती अच्छी ओके ऑब्जर्व व्हाट योर द वर्कर्स आर डूइंग व्हाइल दे आर ऑन क्लॉक so that you can quickly address any problem जदि किसी प्रॉब्लम होचे तमे ताको रैपिडली एड्रेस करि परिबो if some workers are confused or unproductive it's up to the manager to step and fix this issue okay कोटे लेबर प्रोडक्टिव काम देई पारन तो कहार दायित्व होची ताको असिस्ट करिवार मैनेजर जे ताको सुपरवाइज करची ताको ट्रेनिंग दरकार तार किसी प्रॉब्लम होची ताको सॉल्व करिया दरकार ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रॉब्लम अछि जहा फाइन से सफर करची से सब जिंस को मैनेजर ही तो हैंडल करिवो okay then divide workloads appropriately between workers and manager एकता न जे सब जा काम वर्कर करिवे मैनेजर केवल बसिबो किंतु मैनेजर भागरे भी जो कामटा रहया दरकार सेटा मैनेजर करिया दरकार वर्कर को भागरे जो काम तक वर्कर करिया दरकार ओके मेक श्योर दैट मैनेजर अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान एंड ट्रेन वर्कर्स सो दैट द वर्कर अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्लीमेंट दिस प्लान्स अरे मैं खाली प्लान बने के दे देले हिजिबो कि तो तांको से प्लान ऊपर केमती इंप्लीमेंट करिया पड़ियो तांको तो सेटा सिखेबा पड़ियो बुझी पड़छो तो तांको ट्रेनिंग दवा पड़ियो तांको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करिया पड़ियो ओके सो दीज आर देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कौन देखो द प्राइमरी गोल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इंक्रीज इफिशिएंसी प्राइमरी गोल कौन इंक्रीज इफिशिएंसी इंक्रीज करबा when Taylor began his scientific management experiment he focused on increasing efficiency by reducing the amount of time needed to perform the task गोटे काम करिया पे हमु जेति समय लागुची ताऊ कमे देकरी हमें केमती इफिशिएंसी बढ़ाई परिबा माने समय कम किंतु इफिशिएंसी बहुत अधिक okay then this was a good first step but there is a lot more to improving efficiency than just decreasing work time आउरी भी बहुत दिन केवल वर्क टाइम डिक्रीज कर देले होबनी आउरी भी बहुत जिंस अछि efficiency increase करिया पर since Taylor's time other innovators have found more ways to increase efficiency such as implemented automation software okay automation software को implement कर दिया गला ता द्वारा कोन हला टाइम तो बहुत एमिति भी कम खर्च होला ना कि तांको टाइम रे तो से सब नथिला ओके देन अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स अनदर कोन इंक्रीजिंग प्रॉफिट फर्स्ट होची इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करो टाइम को डिक्रीज करो एंड प्रॉफिट इंक्रीज करो अरे ऑर्गेनाइजेशन ने जे बिजनेस करची तार गोल ही कोन प्रॉफिट इंक्रीज करिया ना तो प्रॉफिट इंक्रीज करो ओके इफ एवरीवन इज वर्किंग एज एफिशिएंट as possible then they should be able to produce huge amount of high quality products that translate into more sales and bigger profit margin okay तो तापर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तमे चाहिले आकू पढी परिबा अप्लाइंग साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स आकू भी चाहिले पढी परिबा ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम